Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, today we are going to cover the chapter regarding the non-functional requirements. In the previous lecture, we have covered the chapter regarding the functional requirements. Today we are going to cover the non-functional requirements. This is a week number 11. Okay, and this is also the part of the requirements elicitation activity, which is the first activity of the requirements engineering process. Okay, so we are still in the first activity of the requirements engineering process. This is the longest activity of the requirements engineering process. So Bismillahirrahmanirrahim, let's start. Before few repetition, the from where the requirements come. The requirements come from the stakeholders, and who are the stakeholders? We have discussed previously, who have somehow less or more little bit stake in the projection development. For example, the product user group. Product user group is those people who are going to use the product. Let me clear it for you that nowadays, not nowadays, but since more than 2 decades, the software is also considered as a product. Not in Pakistan, because in Pakistan this trend has come, the trend of supermarkets came since few years, like 5 to 10 years. But in Europe, supermarket is right since several 50 to 60s, since 1950s and 60s. And apart from the consumer products that we consume on a daily basis, supermarkets also have a different section of the electronic products that include the laptops, PCs, cell phones, and the software products as well. So when you go to the supermarket, you also find different products. For example, Microsoft Windows. There's a DVD or CD of the Microsoft Windows in the shelf. There's a DVD and CD of the Microsoft Office, the Symantec Norton antivirus, the McAfee antivirus. So whenever you need some sort of that software, you just put the DVD into your cart and go to the point of sales, a point where you, beside the other products like your eggs, your flour, your biscuits and your cold drinks, you also put your product over there. That is also scanned and you pay the price for that product. So when you come to the supermarket, you also not buy only the consumer products for your daily routine household, but you also buy the software products as well. So that's why it is called a software product. And in future, not in future, but nowadays it's called software product lines. For example, Microsoft Office. So Microsoft Office 2003 version, 2007 version, 2010 version. This is the product line. The first product line is like 1997 when it came, then 2000 came, then 2003. So this is the software product line. And project customers. Project customer who was actually getting this project developed. You have analyst or requirements engineer who is responsible for gathering the requirements for the project. You have project leader who is leading the project, and project leader can be the senior analyst that I told you, because when you go join the software houses, you start from the junior software developer, then you senior software developer, and then you analyst, junior analyst, and senior analyst, and then eventually the project leader. So project leader is nobody but a senior analyst or senior requirements engineer together. The project team member who also stake in the project because they are part of the development team. Your upper management who decides whether this project get developed or not, or if it is get developed, what kind of whether it is feasible or not, how much budget it should be allocated, and whether it is useful for the profit maximization or cost minimization. And for a single project, you might have several alternatives to choose from. So project upper management choose this kind of alternative will be more feasible, more cost effective for that company, so they will choose that alternative as well. So project testers who are going to test the project. Licensing entities, whenever you develop a project, you must get your license, whether it's the open source license, whether there's a proprietary item, whether there's a GNU license. So it is needed to be decided whether what kind of license should be purchased for this particular product. Outside vendors or suppliers. Outside vendor suppliers, maybe
you develop a generic product that can be used in different company in several locations for the different entities. So there will be the marketing persons or people who are going to get your product or buy your product and sell that product to different companies. So outside vendors or suppliers who are the mediatories to sell your product, they can be, for example, you are only expert in developing the project but you are not expert in selling your product. So there will be outside vendors or suppliers who are going to get your product and get it sold for you. The government entities who might be interested in your product, and maybe somehow they have some certain legal requirements or the policies that need to be applied on your software, so they have the stake in your software as well. So these are the different sources from where the requirements come. So requirements type, as we know, requirements type functional, non-functional. We have other requirements type as well: system requirements, hardware requirements, system requirements, user requirements. You have seen the user requirements. Okay, functional we have already discussed. It describes the behavior of the system, functions or services of the system that it will provide. These are the core requirements that provide the different features that belong to the behavior of the system. It supports user goals, tasks and activities that it needed to perform. It includes input, the system state and then output the new state. I don't know whether you have learned the course of finite automata. This was the course initially offered in BS IT and computer science and software engineering fields, where you learn about the different states of the system, कि वो कहाँ से जो है कौन सी स्टेट से इनिशियल स्टेट उसकी क्या है, फिर उसका इनपुट क्या है, फिर उसका आउटपुट स्टेट क्या है, फिर उसका नेक्स्ट इनपुट स्टेट क्या है, फिर उसका आउटपुट स्टेट क्या है. देन इससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट स्टेट उसकी पता चलती है. कहीं भी आपका सिस्टम एरर होता है या क्रैश होता है तो यू रिवर्ट बैक टू द डिफरेंट स्टेट, प्रीवियस स्टेट. तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा का हिस्सा है. आई डोंट नो वेदर यू हैव लर्नड अबाउट इट. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट आई हैड टू गिव यू एन आइडिया. उसकी इनपुट होता है, उसकी इनिशियल स्टेट होती है, और देन यू मूव ऑन टू द आउटपुट एंड द न्यू स्टेट. ठीक है, जिस तरह आपका जो डेडलॉक आपने मेमोरी के अंदर पढ़ा होगा, तो एक वेटिंग स्टेट होती है, एक स्टार्ट स्टेट होती है, एक एक्वायरिंग रिसोर्स स्टेट होती है. तो इस तरह से जो आपकी स्टेट्स होती हैं जो मेमोरी के अंदर, जो कि एक डिफरेंट प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज एक्वायर करने के लिए जो है वो ट्रांजिशन करता है, डिफरेंट स्टेट में ट्रांजिशन करता है. तो इस तरह से आपकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में भी जो है वो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. So what are non-functional requirements? Non-functional requirements in software system engineering, the software requirements that describes not what the software will do, but how the software will do it. So what the software will do, it is the part of the functional requirement, but how the software will do it, how the software will do these functional features, this is a part of the non-functional. This is more of a supportive requirements. For example, software performance requirements, how will software perform. Software external interface requirement, how will software interact with the other systems. Design constraints, how the software's user interface will be designed. And software quality attributes, what kind of software quality attributes you have. Performance, you have a response time, you have throughput, you have a memory usage. So all of those quality attributes. Non-functional requirements are difficult to test, therefore they are usually evaluated subjectively. Because functional requirements, you have a different criteria, different cases, but non-functional requirements, they are a little bit difficult to test because they are subjective. Performance, कितनी अच्छी performance होनी चाहिए, response कितना अच्छा response होना चाहिए, ठीक है ना. जो है वो उसकी user interface जो डिज़ाइन हो, किस तरह का डिज़ाइन इंटरफेस होना चाहिए. So at a certain level आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई इतना अच्छा है. So this is subjective, अच्छा या बुरा, जिस तरह से आप कहते हैं. नॉट क्वांटिटेटिव कि हाँ भाई 1 या 2 या 3 या 4 लेवल हो उसका. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस इट कंटेन्स इलिटीज. इलिटीज मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूजेबिलिटी, how will we use, how easy it will be to use this software, how your software understand the user's input and respond accordingly. Modifiability, is it a possibility, is there a possibility to modify the software easily. Reliability, whether the
results that are provided by the software in response to the input, whether they are reliable or not. Portability, whether it is easy to use this software at different portable devices. Dependability, whether we depend on this software. For example, there are different softwares who are critical in nature, like in aviation industry. You are flying over the an aeroplane, so you have the software should tell you how much 1,000 feet you are currently, and how much speed that you have to maintain, what kind of air pressure is outside the plane, though, so that it's how much air pressure or oxygen should be maintained inside the plane. So there are critical softwares who get input from sensors, and depending on those softwares input, the airplanes, the pilot, the other component, they need to respond. So they are, whether these softwares are critically dependable or not. Flexibility, whether they are flexible to interact with the other softwares. Availability, for example, whenever we require to use the software, whether it is available or not. Similarly, like in banking systems, जब भी हम उसको यूज़ करना चाहें वो अवेलेबल है या नहीं है. Mostly you might have received a message, भाई there will be maintenance of the banking system from 12 to 1 a.m. in the morning on the Sunday. So means that system will not be available. ठीक है, so your system should be available when the user requires. Maintainability, after certain period of time, when the number of users will increase, your software's performance will decrease. So your software should be maintainable in order to not prevent the software from degrading, prevent the software from decreasing its performance. Scalability, is it easy to add more features and increase the scale of the software to make it more enriched with other features as well. It also involves other ETs like security, whether your software is secure or not. Safety, whether your software is safe or not. It also involves NES, user friendliness, robustness, timeliness. Robustness means, and user friendliness means whether it's easy to be used for the end user, because not every person is a software professional, so they understand automatically how software will be used. So with the minimum of our training, or even with no training, your software should follow certain standards जो previously इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं. So give the users idea कि किस तरह से जो है वो इस्तेमाल हो सकता है. Same way, for example, you move from one Android version to another Android version, so you try to maintain a certain level of user interface so that user can understand, so that they don't face any kind of problem to go from one version to another version. Same way for Microsoft Windows. तो आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 इफ़ आई रिमेंबर, तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस जो है स्टार्ट मेन्यू का थोड़ा सा चेंज किया था. तो लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि यार ये किस तरह से जो है वो हुआ. तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, तो देन अगेन बैंक विंडोज़ 10 के अंदर जो है उन्होंने दोबारा से जो दोनों ऑप्शन दे दिए दैट यू कैन यूज प्रीवियस वर्जन ऑफ द विंडोज़ इंटरफेस, या आप नया वर्जन यूज़ कर सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन यू. ठीक है. रोबस्टनेस है, टाइमलीनेस है, हाउ मच सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल. रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है. करेक्टनेस है, प्रोवाइड द करेक्ट रिजल्ट्स. कंप्लीटनेस है, ऑल द फीचर्स दैट यूजर रिक्वायर्स दे शुड बी इंक्लूडेड एज इन द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. लेट मी गिव अनदर एग्जांपल ऑफ completeness. For example, when you use the HPL Bank, the mobile app, so HPL Mobile Bank, you do not only perform the money transactions from one account to another account, but they have also been included the other transactions. For example, if you want to buy your mobile cell phone load, so you can buy your mobile cell phone load, your super card, your super easy card. If you want to pay out your electricity bills, if you want to pay out the gas bills, if you want to pay out your water bills, so they are part of the HBL mobile app as well. If you want to apply for a loan, if you want to apply for a ATM card, if you want to apply for your checkbook, all of the options they come from the HBL, and they are enriching those HBL mobile app with other features as well. So this is called completeness, whether all the users experience that they want everything done at the same shop. So the HBL customer should not go and use
other mobile apps to do their works. For example, there's the Easy Pesa app that can be downloaded on any cell phone and that can be downloaded on any mobile number, irrespective of Easy Pesa that is belong to the Telenor. So वहाँ पे भी आप जो मोबाइल लोड कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं. So these options are also part of your HPL. So do not, मैं पहले Easy Pesa यूज़ करता था बहुत, लेकिन अभी जो है सारे HPL में आ गए हैं. सो आई स्टार्टेड यूजिंग HPL क्योंकि मुझे Easy Pesa यूज़ करने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. कंसाइजनेस, बट स्टिल आई यूज़ Easy Pesa सम हाउ, बिकॉज क्या होता है आपकी जो है वो अवेलेबिलिटी या आपकी रोबस्टनेस में इंटीग्रिटी के आप जब करना चाहो तो वो अवेलेबल है. कभी कभार HPL से आप काम करना चाहो, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहो, मोबाइल बैलेंस या बिल पेमेंट करना चाहो तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता या स्टक हो जाता है. तो वहाँ पे मुझे जाता है अगर बिल की लास्ट पेमेंट है तो मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज़ बेटर. बट Easy Pesa मैं साइड में रखता हूँ. अगर यहाँ से नहीं पे कर सका तो मुझे Easy Pesa के थ्रू मैं पे कर दूँ, रादर देन मैं जो जाऊँ फिजिकली शॉप पे करूँ, जो कि अभी कोविड सिचुएशन के अंदर जो है वो सजेस्टेबल नहीं है. ठीक है. अदर्स लाइक convenience, comfort. Convenience means this is convenience, everything is done on your single mobile app. Comfort है, it is portable, so whenever you go you can use that. Performance है, performance issue है HPL मोबाइल ऐप का, थोड़ी सी स्लो है. Easy Pesa ऐप it is more faster than HPL मोबाइल ऐप. Your efficiency, accuracy कि आपको जब बैलेंस आपने पे किया तो आपका वापस बैलेंस जो आपने पे किया उतना ही कटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. कंसिस्टेंसी, जो ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म की दे शुड बी कंसिस्टेंट. कॉस्ट है, डेवलपमेंट टाइम है, टाइम टू मार्केट मीन्स हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू रीच द मार्केट. ठीक है. डेवलपमेंट टाइम है, हाउ मच टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस पर्टिकुलर फीचर डेवलप्ड. सो दीज आर डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. So what is the difference between non-functional and functional requirements? So functional requirements are used as the verbs. It should do this, it should do this, will be able to pay the bill, will be able to load the easy load, will be able to make the transaction. Okay, so these involve the verbs. Non-functional requirements, attributes. It should have a beautiful interface, a user-friendly interface. It should respond very fast. ठीक है. It should load very fast. ठीक है. The very fast, this can be the attribute. Mandatory, as this is part of the functional requirements. Non-functional requirement, non-mandatory. We can play at the cart of the non-functional requirements. Captured in use cases, captured in quality attribute scenario. Quality attribute scenario आपकी जो है ऑपरेशन आपका quality attribute है, आपका performance quality attribute है, आपका security quality attribute है. उसके अंदर जो आप जो है उसको कैप्चर कर सकते हो. जिस तरह से फिर मेंबर ये तरह की स्लाइड थी कि आपका ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, दीज आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज. फीचर क्या है जो उसका होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो उसकी एडजेक्टिव्स हैं, खुसूसियात हैं. ईजी टू कैप्चर बिकॉज वी नो क्लियरली व्हाट वी हैव टू डू. डिफ़िकल्ट टू कैप्चर बिकॉज दे कैन इंक्रीज अप टू द सर्टेन टाइम कि भाई ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो. लेकिन वो कभी होता है ना कि कभी भी दिल जो है वो पूरा नहीं होता. सो यू हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ और कंप्रोमाइज एट सर्टेन लेवल ताकि आपके प्रोडक्ट जो है इट शुड नॉट बी डिलेड, इट शुड बी डिलीवर्ड. सो बेसिक फीचर्स आप डिसाइड कर लो कि भाई दिस शुड बी आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इतना जो है रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए. फिलहाल आप प्रोडक्ट रिलीज कर दो, बट देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टू इम्प्रूव दैट. इट हैपन्स व्हेन यू डू द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो बेसिक फीचर्स हैं, यू माइट हैव सीन व्हेनेवर यू इंस्टॉल अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन एट योर सिस्टम, इमीडिएटली आफ्टर दैट आपकी विंडोज़ की अपडेट्स आ रही होती है. विंडोज़ के अपडेट्स में अपार्ट फ्रॉम योर फंक्शनल फीचर, majority as your non-functional features, so they are improving the security. Like whenever you see the Windows update, you see that this will improve your operating system security. ठीक है. This is a Furps model for the non-functional requirement. If it stands for functionality, which kind of functionality it will have? URPS involve usability, reliability, performance and supportability.
Plus involves other non-functional requirements. So this is the Furps model. Plus requirements involves implementation requirements, interface requirements, packaging requirements, operation requirements, and legal requirements. We will be discussing those requirements one by one. There is another proposition of Boehm's non-functional requirements list, which involves general utility, which is divided into the as-is utility, portability, reliability, and maintainability. Portability involves device independence. Your software should not be device dependent. It should be self-contained, means self-dependent. It should not depend on something else. It should provide accurate results. It should be complete in all nature, whatever the user is expecting it to do it. Alhamdulillah. Robustness and integrity. Integrity means the transactions that are performed, they should be consistent, and integrity of the system should be maintained. Efficiency, accountability, device efficiency, accessibility. It should be accessible. It should be accountable. Accountable means whenever you perform a transaction, the transaction performed, but somehow it did not provide the desired result. For example, आपने जो है वो easy load के लिए पे किया, लेकिन आपका easy load हुआ नहीं, आपके पैसे कट गए, तो it should be accountable. फिर आप HBL हेल्पलाइन कॉल करोगे, भाई हमने जो किया है यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं है, तो आपको हेल्पलाइन कॉल ना करनी पड़े. आपका सॉफ्टवेयर चीज़ को ऑटोमेटिकली चेक करे कि वाकई आपके, क्योंकि आपका बैंक मोबाइल है विल बी कनेक्टेड टू योर मोबाइल कंपनीज सिस्टम, तो वो वहाँ पे इंडिकेशन भेजेगा, उसको लोड करना है. इफ़ दैट इंडिकेशन डजंट गो फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन टू योर सेल फोन, लोड नहीं हुआ, तो फिर आपके जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्ट होनी चाहिए. तो योर सिस्टम शुड बी अकाउंटेबल फॉर द ट्रांजेक्शंस. Device efficiency, accessibility, it should be accessible all the time whenever you want. Communicativeness, it should be able to communicate other softwares if required. Self-descriptiveness, you do not need to read the lots of material or search on the internet a lot to learn about how to use this software, because whenever you require, you might have seen कि जब आप यूज़ करने के लिए जाते हो कोई चीज़, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन होती है तो क्वेश्चन वहाँ पे क्लिक कर दो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि भाई इस चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया था. इट शुड बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस रादर देन सर्चिंग ओवर द इंटरनेट. कंसाइसनेस, इट शुड नॉट include lots of text to be read. Concise should be concise and more focused in order to reduce the time of the user. Legality, it should be under the legal boundaries. It should not provide something illegal. You might, so it should follow the government regulations and the country's regulations. Augmentability means part of the modifiability. It should be modifiable. It should be augmentable means उसको ऐड करना. augment means ऐड करना या इंक्रीज करना. जिस तरह से आपने भी सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी आपके पास क्या है कि आप अभी रियल एनवायरनमेंट पे बैठ के मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकें, उसको नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं. जिस तरह से आप अभी अपने हैंड हेल्ड डिवाइसेस के थ्रू हाथ में आप मुख्तलिफ ग्लव्स वगैरह पहनते हो, आप ग्लासेस पहनते हो, और आप प्रोडक्ट जो है वो कोई मैप डिज़ाइन करते हो, तो वो आपको हवा के अंदर दिख रहा होता है, तो वो ऑगमेंट हो रहा होता है. ठीक है. एक होती है वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आप कंप्लीटली वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीटली एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट में चले जाते हो. ऑगमेंटेड मीन्स आपकी जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसी के अंदर ऐड हो जाए. जिस तरह आपकी कार के अंदर अगर आपकी जो फ्रंट का शीशा या साइड का शीशा उसमें कोई स्क्रीन में कोई चीज़ डिस्प्ले हो जाए, या बाथरूम में जाते हो आपने जो है स्मार्ट मिरर देखा होगा, तो वो आपकी सामने वाले शीशे पे जो आपको वेदर दिखा रहा होगा, न्यूज़ दिखा रहा होगा, दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी. क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसके अंदर वो इंक्रीज करता है, ऑगमेंट करता है. वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जब आप कंप्लीट एक हेडफोन पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह. वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जब आप कंप्लीट एक 3D नॉट 3D बट ग्लासेस पहनते हो, कंप्लीट एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले जाते हो, जिस तरह आपकी गेमिंग एनवायरनमेंट है. ठीक है. बोथ आर राइट नाउ द इंटरेस्टिंग एंड इन द मार्केट.
So classification of NFRs, there is another classification of non-functional requirements. We have process requirements, product requirements, and external requirements. Process requirements include delivery requirements, how easily you will deliver the software, whether from online or whether at the product. Implementation requirements, your standards requirements, whether you follow a certain standard for the development. सर्टेन स्टैंडर्ड्स क्या है कि जब भी आप स्टार्ट करो तो आपसे वो लॉगिन लेगा, लॉगिन लेने के बाद जो है आपसे यूजर आईडी लेगा, पासवर्ड लेगा, उसके बाद अब फर्स्ट डिस्प्ले आपको क्या दिखाएगा कि आपको बैंक का बैलेंस दिखाएगा या आपको डायरेक्टली जो है प्रीवियस ट्रांजेक्शन पे चला जाएगा. सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स. प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आपकी यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, हाउ इजीली इट विल बी यूजेबल. रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, हाउ वेदर इट इज रिलायबल और नॉट इन टर्म्स ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट. Safety requirements, whether is it easy to use the mobile or mobile app to access your account from mobile phone. It is not whether it is safe or not, कि वो हैक ना हो जाए आपका अकाउंट. Efficiency requirements, it should provide result return in an efficient way. Performance requirements, कि आपकी जो परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. Capacity requirements, whether it should be capable of enough कि आपको जो है वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी यूज़ न करे आपके मेमोरी की. ये हैव एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स दैट इन्वॉल्व लीगल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, कि भाई इतना जो है यूज़र से हम चार्ज ले सकें, इसको इस्तेमाल कर सकें. इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट मीन्स टू हाउ दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू एंटर not integrate but interoperate with another system. The difference between integration and interoperability. Integration means आप अगर आप एक से ज़्यादा components को if you want to modify, so you modify those components, both the components, and integrate those components. Interoperability means you do not modify those components, you somehow introduce something in between as a user interface that you do not modify these two components but connect those components with the help of those interface. So interoperable means you do not modify the component, integrate you have to modify the components. So now we will start learning more about the Furps plus model in detail. Previously we discussed about we discussed about the Furps abbreviations and plus requirement. Now we are going to learn about all of these non-functional requirements in detail. So first is usability. How easy is it for user to accomplish a desired task? Usability, जिस तरह आप बंदा देख रहा है आपको लैपटॉप मिल के आराम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. Learning system features. If something new, is it easy to learn the new system? As you know that new learning management system has been introduced. Whether it is easy to use or to learn that learning management system, or you desire a specialized course to learn the new learning management system जो अभी आपको यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ है. यूजिंग सिस्टम इफेक्टिवली, कि आप इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सकें. मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, it should be less error to no error. Adapting to users needs depending on the feedback of the user. Your system should be adaptable. Increasing confidence, जिस तरह से मैंने बैंक अकाउंट में तो पहले जाके मैं बैंक में ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता था, फिर मैंने ऑनलाइन जो है वो उसकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना शुरू की, फिर मैंने कहा भाई ऑनलाइन इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन. देन यूज टू रिसीव द HTML टेक्स्ट मैसेज, क्या आप मोबाइल को ट्राई करो. व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग HTML मोबाइल, सो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता हो गया. अब मैं जो है HTML मोबाइल के थ्रू भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूँ. परफॉर्म द टास्क क्विकली, आप क्या ऑन द सिंगल क्लिक जो है परफॉर्मेंस टास्क जो है परफॉर्म कर सको, रादर देन जो है आपको मूव करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल HBL का जो पुराना मेन्यू था उसमें आप पहले जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस में ढूंढना पड़ता था बिल पेमेंट कहाँ पे करनी. अब HBL की जो मोबाइल ऐप है दैट हैज़ बिन मॉडिफाइड. आप फ्रंट पे जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपको जो है वो उसका बिल पेमेंट, मोबाइल इजी लोड, परफॉर्म मनी ट्रांजेक्शन, वो आपको सामने उसके मेन्यू में दिख रहा है. रीस्टेब्लिशिंग द proficiency while using system after a long time. Reestablishing the proficiency means you have used the system, but after that usage, after certain time, a few months, a year, or more than even a year, you did not use the system, but because you never needed one. But after 1 year or 2 years, you need to reuse that system. So what you have learned and used the previous system 1 or 2 years, you will be able to use the system in after certain period of time. Means after long time आपको प्रोफिशिएंसी जो जिस तरह से आराम से इस्तेमाल करते थे वो अभी भी जो है वो इस्तेमाल कर पा रहे हो.
ठीक है. General scenario, same happens with Windows user. So Windows is existing since 96, 97, 98. So they modified the Windows, but they kept the core यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़. उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, उसको ज़्यादा खूबसूरत कर दिया. लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो है वो आफ्टर सम टाइम या इवन इफ यू मूव फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन तो आपको विंडोज़ इस्तेमाल करने में जो है मुश्किलात हो. इन ऑर्डर टू इंटैक्ट द यूज़र कंटेंट, यूज़र से उसको रखना चाहिए ताकि यूज़र स्विच ना हो जाए फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. जनरल सिनेरियो, सोर्स user stimulus what the user wants to do in respective of the usability to provide you the user experience. Artifact जो system है. environment run time और configuration time compiled at a deployment time कि आपका जो है वो environment किस तरह से run time पे चीज़ें करता है या configuration time पे compile time पे जो कर चुका है. response what the systems does, response measure time, tries number of errors or solutions when the user performs some sort of transaction. These are all of these things that should be considered while the usability of the system. The measurable criteria for the usability is time taken to learn how to use and realization of the metrics, minutes taken for some users task. तो realization of metrics के कितना टाइम लगता है यूजर्स को टास्क परफॉर्म करने के लिए. And measurable criteria is time taken to learn how to use. Reliability measures the level of risk and the likelihood of potential application failures, whether this system is reliable or not. ऐसा ना हो कि हम इस्तेमाल करें जो है वो सिस्टम फेलियर हो जाए. It is probability that the software will work without failure for a specified period of time in a specified environment. इतना हम उसको गारंटी दे सकें कि भाई इतना टाइम इस्तेमाल करोगे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो यू विल बी एबल टू यूज़ दैट. कम से कम इतना, इससे पहले क्रैश नहीं होगा. जिस तरह से यू सी कि आप व्हेन यू बाय योर मशीन यू आर गिविंग द गारंटी कार्ड. भाई वॉशिंग मशीन आपने परचेज तो भाई वी गिव द 1 ईयर. इफ समथिंग गोज रॉन्ग विल गिव द गारंटी. भाई इस 1 साल से जो है कम जो है वो नहीं होगा. अदरवाइज विल बी kept accountable for that, will change the washing machine for you. Technically, reliability is the ability of the system to behave consistently in a user acceptable environment, and reliability is based on the probability that a system will break. That is, the more likely is it to break, the less reliability is. If it is more likely to break, therefore it makes it less reliable. Reliability of the software is measured in terms of mean time between failure. कि भाई पहले फेल्यूर में वो जो दूसरा फेल्यूर उसमें जो है कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम जो है उसने कोई भी फेल्यूर नहीं हुआ. और फॉर एग्जांपल इफ मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर इज इक्वल टू 10,000 आवर्स फॉर एन एवरेज सॉफ्टवेयर, देन इट शुड नॉट फेल फॉर 10,000 आवर्स फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन. कि भाई 10,000 आवर्स तक आप इस्तेमाल करते जाओ, ये क्रैश नहीं होगा. ठीक है. Reliability is measured to find the performance of software, life of a software, and cause of a failure, whether it fails or not. Number of failures occurring in a particular time of a software, and reliability is considered important because it eliminates the failure mode of the software, whether it is reliable or not. कि जब आप इसको इस्तेमाल करने के लिए जाएं और जो है वो फेल हो जाए. So these different points are self-explanatory. Performance. User's concern is the proper resource utilization. कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो. ऐसा नहीं कि आप जो है कि CPU 100% की तरफ जा रहा हो, 80% की तरफ जा रहा हो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर बहुत छोटा हो, खामखा जो है आपका सिस्टम जो है उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हो. इट शुड बी एफिशिएंट, इट शुड बी सिक्योर, इट शुड बी इजी टू यूज. दीज आर द यूजर्स कंसर्न. Efficiency means provide the desired results at the desired time. Security, it should be secure whether if I use it and give my secret credentials to that. Ease of use, it should be easily usable by the end user. Type of performance requirements आपका response requirements, throughput requirements and availability requirements. Response and throughput requirements is that the time taken to respond to particular request. ऐसा ना हो कि हम कोई इसको we start doing some
वर्क ओवर द सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम गर्म हो जाए, सॉफ्टवेयर हमारा हैंग हो जाए, और रिस्पॉन्स के लिए वेट करते रहें जब उसको प्रोसेस when it completes and provide the result. Availability requirement, it should be available whenever we want to use it. Factors affecting performance, CPU speed, कि आपका CPU स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा तो अच्छा चलेगा, ऐसा ना हो कि आपके सारे के सारे रिसोर्स यूज़ करें, जिस तरह से previously it has been fact has been tests has been performed that from all the browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome uses the maximum resources of the your computer. So it uses more of your memory, more of your CPU. As you've seen that Google Chrome is much faster and its look is much better and user friendly, but its performance in terms of memory usage and CPU usage is not good, because it consumes lots of your CPU resources. Type of graphics card also involves affects your performance, your RAM size, your number of applications running concurrently at the systems, that is affecting the performance of your system. How to increase performance? Performance of computer can be increased by proper care of hardware maintenance. आप जो डिस्क फ्रेगमेंटेशन करें, ये परफॉर्म डिस्क क्लीन अप करें, ताकि जो है आपकी जो डिफ्रेगमेंटेशन जो है वो ना हो, आपकी जो है वो फ्रेगमेंटेशन ना हो, आपकी जो है वो टेम्पररी फाइल्स हैं दैट शुड बी रिमूव, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो होती रहे. और व्हेन यूर यूज अ सॉफ्टवेयर दैट यू थिंक इट इज़ हैवी, you try to close all other applications to give the proper RAM to that. You can increase the RAM of the your hardware when you see your software's performance is degrading. Supportability involves adaptability, whether your software will be adaptable to increase more features. Maintainability means if its performance is going down, we can modify that software in order to maintain it. Internationalization, portability, tolerability, replaceability. We'll discuss about this in one by one. Adaptability, adopt the changes after the deployment efficiently. When we have deployed the software into the production environment, into the real world environment, to the companies, it should be adaptable to add more of the features. Maintainability, deal with the new technology or to fix the defects. मेंटेनेबिलिटी मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर में जो बग्स आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, आप उसको मेंटेन करते हुए जाएं, उसको सपोर्ट देते हुए जाएं. सिमिलरली व्हेन विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हो तो विद द विंडोज़ यू रिसीव डिफरेंट अपडेट्स. दीज अपडेट्स मेंटेन योर सॉफ्टवेयर, एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू ईयर्स, व्हेन विंडोज़ लॉन्च द न्यू विंडोज़, तो वो कहता है आई एंड द सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स the Windows Microsoft will not provide more fixes or corrections for that Windows software, so they won't maintain that particular software anymore. Internationalization, ability to deal with the international conventions. For example, if your software is being, if you have a is being run at several countries, distinguished countries where they speak different languages, where they have different currencies. So if your software is of international nature, so you should provide this particular feature that for example, when you install a particular software, it gives you the list of languages in which language you want to install the software, and when you want to buy the license of the product, it will give you the money in your own country's currency. For example, you are in Europe, you pay euro in euro. You are in Australia, you pay with the euro. With Australian dollar, you are UK, you pay with the pound. Portability can easily be transferred from one environment to another environment. It should be portable. Tolerability, change the aspects on applications functionality. Aspects of means you do not modify the functionality completely, but you change different aspects of it. Aspects mean ऊपर से उसको superficial touch देने के लिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस जो है मॉडिफाई कर दें. ठीक है. टेलर करना, टेलर मीन टेलर क्या करता है, उसको काटता है थोड़ा सा, फिर आपका जोड़ा बना देता है. तो वो कपड़ा एग्जिस्ट करता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं. इसको टेलर करता है. जिस तरह से आप जाते हो भाई ये जो यहाँ से जो है थोड़ा सा लूज, उसको टाइट कर दें, यहाँ से टाइट इसको लूज कर दें. रिप्लेसिबिलिटी, रिप्लेसिंग अनदर सिस्टम दैट परफॉर्म द सेम फंक्शनलिटी मीन्स दिस सिस्टम शुड प्रोवाइड द
easily availability, not availability, but give an idea that this should be easily replaceable by with another system. So for plus, now we will discuss about the plus requirement, implementation requirements, physical requirements, interface requirements, packaging requirements, operation requirements, and legal requirements. Implementation requirements involve direct changing कि directly उसको modify कर सकें, parallel running of a code, third party component involved. Third party component means आप उसमें कोई दूसरे जो है component off the shelf components जो हैं different add-ons जो है उसके अंदर add करते हो अपने software के अंदर. Implementation languages हैं, what kind of languages your software is going to support. Platform support आपका जो है आप what kind of platform your software will be running आपका, if your mobile app that it will be running on Microsoft Windows or Android or iOS etc. Limited resources, required standards, it should follow certain standards, right for database integrity, operation environment. These are the part of the implementation requirements. Interface requirements, what kind of button you are going to use, what kind of images you are going to use, the color scheme. Color scheme, for example, in China, the red color is considered good, green color is not considered good, is bad. In Taiwan, red is considered bad, but green is considered good. So you have different color requirements according to different countries as well. Labels, panels, icon or shortcut keys that you are going to apply on your application. Your physical requirements. A physical requirement specify a physical constraints imposed on the hardware reuse of software. कौन सा material, shape, size, weight, किस तरह का आपको जो है हार्डवेयर दिखना चाहिए, किस तरह की शेप होनी चाहिए, किस तरह साइज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एप्पल्स प्रोडक्ट्स जो है वो दे वर्क ऑन द हार्डवेयर एज वेल, कि आपका जो मैक किस तरह से दिखना चाहिए, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है, हाउ इट शेप शुड बी, हाउ लाइट इट शुड बी, हाउ व्हिच काइंड ऑफ साइज शुड बी, उसका वेट कितना होना चाहिए. ठीक है. सो इनिशियली बिफोर द PCs there were the Microsoft PCs, there were the Macintosh system. So if you see that the Apple's products Macintosh, they were beautiful and very attractive in terms of the product. So it should also increase the users acceptability and users interest in the product. वो दिखता है किस तरह से. Packaging requirements, these tools cover every aspect of building, installing and maintaining software packages and include the ability of having multiple versions of single software package installed currently. For example, Microsoft Visual Studio, you have a personal edition, you have a home edition, you have a professional edition. So you have different versions of a single software package and building, installing, maintaining. So as you are seeing, this Windows Vista is in DVD format. Another product is also in DVD format. So you will find this DVD format in your supermarkets whenever you go. तो आपकी प्रोडक्ट जो है इसको पैकेज करके इस तरह से रखते हैं ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सको. इवन योर माउस, आपके लैपटॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स, हाउ योर सॉफ्टवेयर इज ऑपरेशनल और वेदर इट इज़ नॉट ऑपरेशनल. ऑपरेशन मीन्स वर्केबल है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं कुछ फॉर सम टाइम जो है सुबह से लेकर दिन तक काम करे, फिर शाम को डाउन हो जाए, फिर रात को काम करे, फिर सुबह को डाउन हो जाए. एंड ऑफ कोर्स लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स पायरेसी कंट्रोल. व्हाट काइंड ऑफ measures, the precaution you want to enforce on your software. जिस तरह से अभी जो है डोंगल का जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. डोंगल मीन्स आपकी USB टाइप एक की होती है कि जब आप कंपनीज को ये सॉफ्टवेयर पैक करते हो, फिर जैसे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस, तो जो है वो आप जो है वो डोंगल लगाओगे तो सॉफ्टवेयर चलता है, डोंगल नहीं लगाओगे तो सॉफ्टवेयर नहीं चलता. तो अगर आप सॉफ्टवेयर जो है whether you give the software to particular person, if somebody copies that software, despite of that he or she will be unable to use that software because he or she doesn't have a proper dongle key. तो वो हार्डवेयर डिवाइस है, वो आप लैपटॉप के साथ लगाते हो फिर आपका सॉफ्टवेयर चलता है, अदरवाइज वो नहीं चलता. आपके कॉपीराइट लॉज हैं, जिस तरह देयर इज अ प्रॉब्लम विद एंड्रॉयड एंड जावा, दैट एंड्रॉयड हैज बीन यूजिंग द जावा APIs without the consent of the Oracle Corporation, because Java is a property of the Oracle Corporation. So there's a legal battle between those companies. So the copyright law, the privacy law, like Apple iPhone put your data into your iCloud, or you use Dropbox. So what kind of data you want to put in, and how they are going to use this data. For example, on Facebook we provide you different personal data, so how Facebook is going to use their personal data.
Safety instruction, whether it is safe to use their software or not, it is reliable or not. Okay guys, so this is the end of the lecture. Hope that now functional requirements are clear for you, and the next we will come with a different lecture. I hope that will be regarding the requirements analysis. So see you guys, take care, and inshallah